information about this is the classifications of a ligand. Classification of ligands. आता लिगँडचे क्लासिफिकेशन हे दोन प्रकारे आपण करू शकतो. पहिला प्रकार आणि दुसरा प्रकार. पहिला प्रकार असा आहे की ऑन द बेसिस ऑफ कुठला बेसिस वर? ऑन द बेसिस ऑफ डोनर ॲटम. डोनर म्हणा किंवा चार्ज म्हणा. ऑन द बेसिस ऑफ डोनर और चार्ज. अगेन ऑन द बेसिस of bonding connectivity. तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन मतलब एक्सप्लेन करने वाले हैं. पहला क्लास दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डोनर. तो यामध्ये मोनोडेंटेड काय आहे? मोनोडेंटेड. व्हाट डू वी बाय मोनोडेंटेड? पहिला बायडेंटेड, ट्रायडेंटेड. दूसरा है यहाँ पे बायडेंटेड. डेंटेड मतलब देने वाला. तीसरा ट्रायडेंटेड. मोनोडेंटेड, बायडेंटेड, ट्रायडेंटेड, टेट्राडेंटेड आहे, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड. त्याचे क्लासिफिकेशन आहे मोनोडेंटेड, बायडेंटेड, ट्रायडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड. पेंटाडेंटेड आणि हेक्साडेंटेडला आपण काय म्हणतो? पॉलीडेंटेड असं म्हणतो. काय म्हणतो? पॉलीडेंटेड. तर चला मग पहिला क्लास स्टार्ट करूया. पहिलं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनर ॲटम और चार्ज. मोनोडेंटेड. आता डेंटेड म्हणजे काय? मोनो म्हणजे एक सिंगल डोनेट करने वाला इलेक्ट्रॉन. दिस इज नथिंग बट मोनोडेंटेड लिगँड. व्हॉट यू मीन बाय मोनोडेंटेड लिगँड? आता यामध्ये मोनोडेंटेड मध्ये निगेटिव्ह लिगँड बघू काय? निगेटिव्ह लिगँड. व्हॉट यू मीन बाय निगेटिव्ह लिगँड? ओके, सो दॅट इज व्हॉट वी विल हॅव. दिस इज द मोनोडेंटेड लिगँड, निगेटिव्ह लिगँड. hydroxide, cyanide, NC, isocyanide, CNO, cyanate, NCO, isocyanate, NCO, isocyanate. ओके, उसके बाद that is NH2, amine, बोलेंगे इसको amine. NH, okay sir, NH negative, sir, NH2 negative is also. That's amido group is there. Amido म्हणतात. So that is nothing but O2 negative. पराक्सो म्हणतात. काय? पराक्सो, सुपर ऑक्सो. O2 निगेटिव्ह. याला म्हणतात सुपर ऑक्सो. आता हे कुठले लिगेंड घेतात आपण? निगेटिव्ह मोनोडेंटेड मतलब एक डोनर एटम जिसमें एक ही डोनर एटम है. जिस लिगेंड में एक ही डोनर एटम है तो दैट इज नथिंग बट मोनोडेंटेड. उसके बाद है ये वाला फ्लोरो ब्रोमो आयोडो है ना. फ्लोरो ब्रोमो आणि आयोडो. सो दिस आर द निगेटिव लिगेंड्स. अब इसमें पॉजिटिव भी है. पॉजिटिव की बात करेंगे. दैट इज व्हाट पॉजिटिव लिगेंड. देखो पॉजिटिव लिगेंड कौन से? दैट इज व्हाट H3O पॉजिटिव. हाइड्रोनियम क्या म्हणायचं? हाइड्रोनियम. ओके, इसके बाद नाइट्रोसिल कार्बोनिल. दैट इज व्हाट नाइट्रो. NO2 पॉजिटिव असं ना. NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव. आणि नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम. इसमें क्या होगा? एक नाइट्रोनियम है. अब नाइट्रोनियम कौन सा होगा? हाँ, ये वाला. इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम. आणि याला नंतर नाइट्रोसो क्या? नाइट्रोसोनियम. क्या बोला?
नाइट्रोसोनियम, दिस इज द पॉजिटिव। और इसमें NH2 बोले हाइड्रोजन H2N कुठे यूज केलं होतं आपल्या याच्यामध्ये NH2 चा हायड्रोजन कुठली रिएक्शन आहे उल्फ रिडक्शन है ना, उल्फ रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो NH3 पॉजिटिव यहाँ पे देखो, so that is hydrazonium, so these are the positive monodentate ligand, these are the positive monodentate ligand। so next न्यूट्रल की बात करेंगे, वाटर है कार्बोनिल नाइट्रोसिल SH that is organic order NS here NS again pyridine, so that is order aqua, इसको बोलते हैं aqua ligand, मतलब AQUA aqua ligand, याला म्हणतात कार्बोनिल। न्यूट्रल लिगंड बरं आहे, न्यूट्रल कुठले पण माहिती आहे का, न्यूट्रल हे आहे मोनोडेंटेट, यांना म्हणतात न्यूट्रल मोनोडेंटेट। कुठले न्यूट्रल मोनोडेंटेट। नायट्रोसिल थायोनाइट्रोसिल है ना, थायोनाइट्रोसिल, so what is that थायोनाइट्रोसिल। pyridine, so reaction is now pyridine, 6 member tetracyclic compound pyridine, काय म्हणतात pyridine याला असं म्हणतात, 6 member heterocyclic compound, this is the important of pyridine, what you can say pyridine। so that is what on the basis of donor atom or charge monodentate। अब बात करेंगे बायडेंटेट की, बायडेंटेट लिगेंड, वेरी सिंपल, S double one O single one O negative, C double one O single one O negative, nitrogen double one O single one O negative, these are the what, दो डोनर एटम है देखो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव दैट इज ऑर्डर नेगेटिव डोनर, दैट इज 2 डोनर एटम है, कितना है 2 डोनर एटम्स, ये दो है ये दो है ये दो है, so that is ऑर्डर सल्फेटो कार्बोनेटो नाइट्रेटो सल्फेटो कार्बोनेटो नाइट्रेटो। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम देखने वाले, इससे अलावा बायडेंटेट लिगेंड्स। आता मला याचं नाव सांगा बरं, काय सांगायचं नाव काय, हां काय ऑक्झॅलिक ऍसिड, व्हेरी गुड ऑक्झॅलिक है ना। मग इथं मला काय करायचं, हायड्रोजन काढायचं आहे, निगेटिव्ह काय झालं मग ऑक्झॅलिक ऍसिड म्हणजे ऑक्झॅलॅटो। आता याचं नाव सांगा काय, क्या नाम है इसका, ये है कैटाकॉल, क्या नाम है इसका कैटाकॉल। अब ये हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाना है, इसका नाम है कैटाकोलैटो। चॉकलेट नहीं रे बाबा, तो चॉकलेट म्हणू लागला कोण, कैटाकोलैटो, इट इज नोन एज कैटाकोलैटो। सो अनदर एग्जांपल इज ऑर्डर second C ordination nothing but order CHO and this OH, सांगा बरं याचं नाव काय, this is the salicylaldehyde है ना, salicylaldehyde। आता मला इथं काय करायचंय, हायड्रोजन काढून घ्यायचं आहे, हायड्रोजन रिप्लेस बाय 1 निगेटिव्ह चार्ज, साली salicylate, okay, so that is the this is nothing but what bidentate ligands, these are the bidentate ligand, इसको bidentate ligand है। ethylene diamine, कैसे दिस ethylene diamine bidentate ligand, neutral बोलेंगे इसको, neutral bidentate ethylene diamine। so another types of the example we can say this is what this types of the compound is OPD, orthophenyl diamine, so these are the
bidentate ligand. This is neutral bidentate ligand. So another example is this order. Next example classification number 3, tridentate ligand. Tridentate ligand. Tridentate ligand. अब देखो tridentate के बाद का हमने तो जैसे nothing but nitrogen atoms क्या next one CS2 this nothing but CS2 atom है nitrogen NH2 यहाँ पे NH2 यहाँ पे NH2. So can what the next one example can say this order CS2 here. So that is how can I this one CS2 atom is here. Where is CS2 atom? Can I this NH2 atom is here. NH2 1 2 3 4. So this NH2 atom is here, and again this is another type of example. NH2 atom is here. So this is the butylene diamine. I say the butylene or triamine, है ना butylene triamine. यहाँ पे इसका नाम है propylene triamine, है ना propylene triamine. So another example we discuss the part of this is amine compounds. This the types of the compound is nothing but CS2 CS2O. This is nitrogen. This one is nitrogen. So that is how we can take this one CS2 atoms here CS2. यहाँ पे हम बात करेंगे this one nitrilo ना. So we are talking this is the nitrogen atom here. Nitrogen CS2 again this CS2 atoms. So this is nothing but NH2 atom is here, and this is nothing but NH2 atom is here. So this is what we can say any types of the alkyl group here. So triamino. So the triamine is there. So that is the what tridentate ligands. कौन सा tridentate ligand. 3 donor atom is there. Tridentate. इसके अलावा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं tridentate का. इसमें क्या है another types of the example is what tridentate ligands. This one nitrogen atom CS2 this CS2 NH2 और यहाँ पे NH2. So this is one of the tridentate ligand. This one is tetradentate. So this is what a tridentate ligand is. Okay, this is what a tridentate ligand. Okay, so we are talking this is a tetradentate ligand. The fourth classification number tetradentate ligand. So that is what the complex compounds or ligands which are having this is the 4 donor atom. So if you are having this is the nitrogen atom, nitrilo. This you can triacetate. This is the triacetate. Okay, now you can take the CS2 atom. This is the CS2 atom. This one is the CS2 atom. COO, and this COO. So if further example, first one example, this is tridentate. देखो यहाँ पे donor atom 1, 2 और 3 ये होगा tridentate. इसको भी हम क्या कहते हैं ट्राइडेंटेट लिगैंड. अब हमको टेट्राडेंटेट चाहिए. सो वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय दिस टाइप ऑफ द ग्रुप इज नोन एज टेट्राडेंटेट लिगैंड. और इसका और कैसे टेट्राडेंटेट लिगैंड. सो दैट इज नोन एज टेट्राडेंटेट लिगैंड. सो दिस इज व्हाट टेट्राडेंटेट लिगैंड. व्हाट इज द नेम NTA. You can say NTA triacetate. This is triacetate. Triacetate is here. So this is a nitrilo triacetate. What can I say? Nitrilo. Lotilo नहीं रही बाबा. तो lotilo बनतो. Nitrilo triacetato. This example what? Nitrilo triacetato. It is example of what a tetradentate ligand. हम बात करेंगे pentadentate की. What is that? Pentadentate and hexadentate. So that is one of the example. This is the pentadentate. I am writing here the fifth one is called pentadentate, and this is what a hexadentate. You can say hexadentate. So both are the polydentate ligand. The classification is known as polydentate. Pentadentate and hexadentate are the polydentate ligand. If we are having this one pentadentate is nothing but we can take CS2 here, nitrogen atom, this CS2 here, these types of the group COO. हाइड्रोजन atom है 1 डोनर 2 डोनर 3 डोनर 4 डोनर 5 डोनर. ये डोनर 3 और 2 5 इसको बोलते हैं ADTA.